हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बहुत ठंडी है, 10 डिग्री सेल्सियस है और हमारा रूम से ये व्यू है। और आज सुबह वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल रात को सो गई थी बिकॉज हम सब थक गए थे। ओह शिट। Hi everyone, welcome back to my channel. And before I start, I want everyone to hit the like button and subscribe to my channel if you haven't yet. So अभी हम रिसोर्ट पे हैं और हमारा जो रूम है वहाँ से व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा awesome है। एंड गाइस ऊटी में बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है ऊटी में। लिटरली लाइक हाथ धोने नहीं हो रहे हैं cause the water is so cold. But the fields is so awesome. Like हमें नींद बहुत अच्छी है रात को and the view from my room is so beautiful. Guys, हम सब रेडी होके ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं. Right now we are gonna go to Coimbatore for the stay. और हमारा ड्रेसेस ये है. इधर बहुत बारिश हो रही है, इधर बहुत बारिश हो रही है और हम बार बार वापस जाएंगे. Hey guys, बहुत ज्यादा ठंडी है और बहुत बारिश हो रही है. हम सब ने छाते नहीं रहे और बहुत ठंडी है और हम कहीं तो जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत ठंडी है. लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत क्लीन और अच्छा लग रहा है. गाइस इनकी हालत तो देखो, बहुत ठंडी है. अभी थोड़ी बारिश कम हो गई है बट हम जिस जगह पे आए हैं उसका नाम है डोडोबेट्टा. और डोडोबेट्टा हाँ मी व्लॉगसाठी घेतीये. गाइज हम माउंटेन्स के बीचों बीच है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट और द व्यू इज सो 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 ऑसम गाइज. हे गाइस, तो हम लोग फाइनली कोयम्बतूर पहुंच चुके हैं आफ्टर अ लॉन्ग 4 आवर ऑफ जर्नी. मेरी हालत देख ही रहे होंगे आप. बट हमारे रूम्स काफी ज्यादा अच्छे हैं. द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है. हाय गाइस, सो आज की हमारी पिकनिक में रूम की लास्ट नाइट है. सो हम बहुत सब हाय गाइस, इट्स अ गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट इज डन. नाउ आई एम गोना गेट रेडी. देन वी आर गोइंग बैक टू मुंबई. दैट्स सो सैड, आई नो. But still we have one night in train. But still it's so sad that today we are going to our particular homes. Guys, मेरे ना like in my relatives, मैथिली जानवी के मॉम डैड यानी कि मेरी बुआ और मेरे अंकल की एनिवर्सरी है. So we were planning something कि to get some donut type cake, cupcake, cause इधर तो कुछ होगा नहीं उतना. So but when we asked my dad, he said कि हम थोड़ा ट्रेन में ही मंगा लेंगे. But let's see how it goes. और फिर उधर करेंगे केक एंड ऑल 12 o'clock को. Cause we want to surprise them. इस वाले रूम से सॉर्ट ऑफ व्यू एंड ऑल कुछ नहीं है बट द विंडो इज टू नाइस और इधर सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है. Hey guys, so मैं आपको जैसे पहले बोला था वो एनिवर्सरी है. सो 12 o'clock का सेलिब्रेशन है और वी आर एक्चुअली
This is the cake and here is the preparation. हमने गाइस ट्रेन में मंगाया है. कैमरा छुपा देती हूँ. They don't know. We are gonna prank them saying Janvi is crying. So let's see. Lights off करने आते. अंदर आते. So we are finally back from the trip home, and actually we were long back. Like it's too late. What I actually wanted to do is like videos to be uploaded like there and there itself. Like one day over, फिर मैं night को ही the vlog post कर दूँगी part 1 फिर part 2 ऐसा I was gonna do, but where we were staying the place was inside like अंदर बंडीपुर के जंगल में we were staying there, so the range network कुछ भी नहीं था. ऊटी में I got a little bit network, but फिर भी उसने में it was not like I could have edited the video full. So कोयम्बतूर में तो पूरा था नेट, but उधर अभी करते फिर पोस्ट करना, फिर भी उधर I started editing the first part and I did it. So first part was posted very early after as soon as coming here, and this I would actually love if you all comment on my videos क्योंकि I had actually put on a lot of effort in it, and मतलब I don't know कि is that the perfect thing how it has to be, but I have given my best there. So if you all want for me to do any improvements or anything, like even if whatever you want to see the next in my videos, you can actually comment below in the comment section, and please do like, subscribe and share my channel with everyone. By the way, thank you so much if you have watched all the 5 parts. If not, please go and watch. The link is given in the description, and all the resorts like where we went and the places and all, everything is given in the description in this video only. So please see the description, and if you like these places you all can visit. Like Mysore Palace is something very recommended, highly recommended, like you should visit, क्योंकि whatever was shown there is not something that we can actually capture in camera. जो हमारे आँखें देखते हैं वही हो जाता है वो सब फिर. एंड बाकी दिस इज इट. आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर ली, but see you in the next video which won't be coming soon, but if you all have watched all the 5 parts, thank you so much. Watch nahi, you all have to like also, share also.